these closest countries are our neighboring countries. India is in the east, Afghanistan and Iran are in the west, China is in the northeast. Now, look at this map. Can you see Pakistan? And can you see the neighboring countries of Pakistan? Okay, let me show you. This is India, China, Afghanistan, and Iran. These are the four neighboring countries of Pakistan. And here is Arabian Sea because it is a sea, not a country. That's why it is not our neighboring country. It is a sea which is off the coast of Pakistan. So we have four neighboring countries. What are the names? India, China, Afghanistan, and Iran. In our previous video, we discussed about India. So let's take a quick recap what we have learned about India in our previous video. India is larger than Pakistan. It is about 4 times the size of Pakistan. As you can see, children, that this is India. And it is 4 times the size of Pakistan. It is 4 times the size of Pakistan. This is Pakistan. And India is 4 times the size of Pakistan. It means that India is larger than Pakistan. Okay, children? India, people and culture. We discussed about landforms of India. We discussed about mountains and rainforest, mangrove forest, and deserts. Okay, and then we discussed about people and culture. Most people in India are Hindus or Muslims, but there are also Christians, Buddhists, Sikhs, Parsis, and Jains. Hundreds of languages are spoken in India, including Hindi, Urdu, and English. इंडिया में सिर्फ हिंदूज ही नहीं रहते बल्कि उनके साथ साथ वहाँ पर डिफरेंट रिलीजन से ताल्लुक़ रखने वाले लोग रहते हैं जिनमें मुस्लिम्स भी हैं, क्रिश्चियंस, बुद्धिस्ट, सिख, पारसीस और जैन्स। इसी तरह से इंडिया में डिफरेंट ज़बानें यानी कि लैंग्वेजेस भी बोली जाती हैं जिनमें हिंदी, उर्दू और इंग्लिश भी हैं। ठीक है, बहुत सारी मुख्तलिफ़ लैंग्वेजेस इंडिया में बोली जाती हैं क्योंकि इंडिया हैज़ अ वास्ट कल्चर. Different people live there with different religions, different languages they speak, and they have different cultures. That's why they speak different languages. So, hundreds of languages are spoken in India, including Hindi, Urdu, and English. Let's discuss the key facts about India. India is 4 times the size of Pakistan. India is 4 times the size of Pakistan. New Delhi is the capital of India. New Delhi is the capital of India.
It has mountains, deserts, plains, jungles, and mangrove forest. It has mountains, deserts, plains, jungles, and mangrove forests. Lions and tigers live there. And I told you that both lions and tigers are endangered animals. What are endangered animals? Endangered animals are those animals which animals are their species are rare, and if we will not protect them, then our future generations cannot see them. ऐसे जानवर जो बहुत रेयर हैं, जिनकी स्पीशीज़ बहुत कम रह गई हैं, ऐसे जानवरों को इंडेंजर्ड एनिमल्स कहते हैं। और इंडिया में ऐसे कौन से जानवर हैं जो इंडेंजर्ड हैं? लायंस एंड टाइगर्स, बोथ आर इंडेंजर्ड and they need special help to survive in the wild. Okay, class? It grows rice, tea, cotton, jute, and potatoes. So, the main crops grown in India are rice, wheat, cotton, tea, jute, and potatoes. Okay, class, now let's start our today's topic. Our today's topic is also very interesting. It is about one of our neighboring country, which is Iran. Children, you know that Iran is also our neighboring country and it is twice the size of Pakistan. ये पाकिस्तान से 2 गुना बड़ा है। ये भी पाकिस्तान का एक नेबरिंग कंट्री है, यानी कि पड़ोसी मुल्क है। ईरान का पूरा नाम है इस्लामिक रिपब्लिक ऑफ ईरान। द फुल नेम ऑफ ईरान इज इस्लामिक रिपब्लिक ऑफ ईरान। द पॉपुलेशन ऑफ ईरान इज 74.8 मिलियन। कैपिटल ऑफ ईरान इज तेहरान। ईरान के कैपिटल का क्या नाम है बच्चों? तेहरान। तेहरान, से विद मी, Tehran. Very good. Major cities in Iran are Mashhad and Isfahan. Mashhad and Isfahan are major cities. Major language is Persian. फारसी बोली जाती है, पर्शियन बोली जाती है, और रिलीजन, मेजर रिलीजन इस्लाम है। ठीक है, तो ये तो थे क्विक फैक्ट्स अबाउट ईरान। अब हम ईरान के बारे में डिटेल से डिस्कस करेंगे। ईरान इज़ ट्वाइस द साइज़ ऑफ पाकिस्तान। ईरान का साइज़ आप देख सकते हैं, ये पाकिस्तान से 2 गुना बड़ा है। मैंने नीचे मैप में ईरान को हाईलाइट भी किया है। ये आपकी बुक के पेज नंबर 47 पर भी मौजूद है एक मैप, आप वहाँ भी देख सकते हैं, वरना आप इस वीडियो के मैप को गौर से देखें। अब आप मुझे देख के ये बताएं कि ईरान बॉर्डर्स किन किन कंट्रीज़ के साथ शेयर करता है। कैन यू नेम दोज कंट्री? यस, वेरी गुड। इट हैज़ अ बॉर्डर विद पाकिस्तान। हमें नज़र आ रहा है, वी कैन सी, ये पाकिस्तान है, दिस इज़ पाकिस्तान and it is sharing its border with Pakistan. Then Afghanistan, very good. Turkmenistan, this is Azerbaijan, this is Armenia, this is Turkey, and this is Iraq. Now let's count 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7.
So we can say that Iran has borders with 7 countries. Iran has borders with 7 countries. And what is the capital of Iran? Tehran. Tehran is the capital of Iran. Okay, children? And it is sharing borders with 7 countries. कौन से हैं? Azerbaijan, Armenia, Turkmenistan, Afghanistan, Turkey, Iraq, and Pakistan. Okay, children? Can you see the coastline? It also has a coastline on the Persian Gulf. Let me show you. This is the coastline of Iran. This is a complete coastline. Okay, children? This is the coastline of Iran, and this coastline is on the Persian Gulf. Here you can see it is written Persian Gulf. This is Persian Gulf. Okay, the Gulf of Oman and the Caspian Sea. This is the Caspian Sea, and it is also having a coastline here. Okay, can you see this coastline? Okay. I think that this map is more prominent. Let's repeat. The neighboring countries of Iran are Pakistan, Afghanistan, Turkmenistan, Azerbaijan, Armenia, Turkey, and Iraq. Tehran is the capital of Iran. It is having a coastline here on the Persian Gulf. This is the Persian Gulf, and here with the Caspian Sea. Okay, it has a coastline. Okay, class, let's move. Let's see the landforms. Iran is very mountainous. Okay, it means that there are so many mountains in Iran. There are thick rainforests in the north of the country and deserts in the east and central areas. It means that ईरान में थिक रेन फॉरेस्ट भी हैं जो कि कंट्री के नॉर्दर्न साइड पे हैं, नॉर्थ साइड पे हैं. इसके अलावा ईरान में डेजर्ट्स भी हैं और डेजर्ट्स ईस्ट की तरफ हैं और सेंट्रल एरियाज़ की तरफ हैं. Okay, as you can see in this map, Dashte Lut, it is also written in your book on page number 47, Dashte Lut and Dashte Kavir. These are the two famous deserts. Okay, these are the two famous deserts of Iran, Dashte Lut and Dashte Kavir. एंड एज वी टॉक्ड अबाउट माउंटेन्स, तो कौन कौन से फेमस माउंटेन्स हैं यहाँ पे देखिए, आपको नज़र आएगा एल्बर्ट्स माउंटेन की यहाँ पे रेंज नज़र आएगी आपको, और यहाँ पर है जैग्रूस माउंटेन्स. ये भी माउंटेन्स हैं. जैग्रूस माउंटेन्स एंड एल्बर्ट्स माउंटेन्स बोथ आर फेमस. ये फेमस माउंटेन्स हैं ईरान के. इसी तरह से दश्ते कावीर और दश्ते लूत, ये दोनों डेजर्ट्स हैं. ठीक है, These two are the famous deserts of Iran. इनके नाम आप याद रखिएगा, दश्ते लूत and दश्ते कावीर. And what are the names of mountains? Zagrus Mountain and Alberts Mountain. Both names are mentioned on your book, page number 47. ईरान यूज़ टू बी कॉल्ड पर्शिया एंड मोस्ट पीपल स्पीक फ़ारसी. ईरान का पहले ईरान पर्शिया कहलाता था, और यहाँ पर लोग जो है ज़्यादातर लोग फ़ारसी बोलते हैं, पर्शियन बोलते हैं. मोस्ट पीपल लिव इन द नॉर्थ वेस्ट एंड आर मुस्लिम्स. ज़्यादातर लोग जो हैं वो नॉर्थ वेस्ट में रहते हैं ईरान के, और वो मुसलमान हैं.
The northwest area receives the highest rainfall, so this is where most crops are grown. वजह रीज़न क्या है? ज़्यादातर लोग नॉर्थ वेस्ट में क्यों रहते हैं? क्योंकि नॉर्थ वेस्ट में हाईएस्ट रेनफॉल होती है, सबसे ज़्यादा बारिश होती है, जिसकी वजह से वहाँ पर बहुत अच्छी क्रॉप्स कल्टीवेट की जाती हैं, जिसकी वजह से ज़्यादातर लोग नॉर्थ वेस्ट में रहते हैं। क्रॉप्स ग्रोन इन ईरान, यहाँ पर मैंने कुछ पिक्चर्स शेयर किए हैं आपके साथ। ये वो क्रॉप्स हैं जो ईरान में ग्रो करती हैं। क्रॉप्स इंक्लूड वीट, राइस, टोबैको, फ्रूट, शुगर बीट एंड टी। ये डिफरेंट क्रॉप्स हैं जो कि ईरान में ग्रो की जाती हैं। इससे रिलेटेड क्वेश्चन आपके असाइनमेंट में भी होगा, तो काइंडली आप वीडियो को गौर से देखेंगे ताकि इस क्वेश्चन को ईजीली सॉल्व कर सकें। कौन कौन सी क्रॉप्स हैं जो ईरान में कल्टीवेट की जाती हैं, ग्रो की जाती हैं? wheat, rice, tobacco, fruit, sugar beet, and tea. Factories in Iran. Iran mines oil, natural gas, copper, iron ore, and precious stones. यहाँ पर मैंने नीचे आपके साथ पिक्चर्स शेयर की है जिसमें ऑयल की माइनिंग हो रही है, ऑयल निकाला जा रहा है, ठीक है। नेचुरल गैस की माइनिंग हो रही है, अगर आप थर्ड पिक्चर को देखें तो। इसी तरह से कॉपर और आयरन ओर की भी माइनिंग होती है, जिसके बाद क्योंकि ये रॉ मटेरियल होता है, इसके बाद इनसे डिफरेंट फिनिश प्रोडक्ट्स बनाई जाती हैं और उनको डिफरेंट चीज़ों में यूज़ किया जाता है। इसी तरह से प्रीशियस स्टोन्स भी ईरान के बहुत मशहूर हैं। सबसे ज़्यादा जो फेमस प्रोडक्ट है ईरान की वो है ये पर्शियन कारपेट्स, जो कि बहुत मशहूर हैं और ये वर्ल्ड वाइड इनको सोल्ड किया जाता है। ईरान की फैक्ट्रीज़ में क्या क्या बनता है? कार्स, इलेक्ट्रिकल गुड्स, कंप्यूटर प्रोडक्ट्स, फूड एंड केमिकल्स। Thank you very much for watching this video class. Take care of yourself. Allah Hafiz.